All right, so it was quite a lazy Saturday, so thought to come up live very abruptly. I know I didn't announce it anywhere, but I came up live very abruptly. So let's see if the people are going to show up. So I can see one thumbs up. So warm greetings to everyone. I would like to wait for a while so that people can join and people can ask a lot of questions. So, on this Saturday Live, I'm taking a lot of questions related to cybersecurity, ethical hacking. Oh, suddenly 13 people have shown up and gradually they are increasing. Happy to see that. But anyways, today we are going to talk about the cybersecurity and ethical hacking, the things that are moving around the ethical hacking. There are a lot of things that we have discovered into the ethical hacking while we were exploring in this field, like the healthcare cybersecurity, which is going to be a major issue. A very big question that was arriving these days, that four people died from the ransomware attack that happened into the hospital. The doctors were not able to see the heartbeat of the patient, and in between the operation, this sudden thing happened, which really shook up the world. And the people were talking about the ransomware and the cybersecurity that is taking the peak into the healthcare sector as well, which is going to be a big thing. So I can see some of the chats as well. I would really like to talk to you people about what do you think about the cybersecurity and the era that is moving up day by day. So Abhishek Chaudhary, hello sir, belated happy Diwali, Abhishek. Suhadi Bishay, best backend technology to pick up. I think Mern. Mern is really amazing out there. So you should be a Mern stack developer in order to, move on to the backend technology. But, backend is really vast, really very big. And also on this Monday, we have a course coming up onto the backend technology on Learn Code Online. So you can definitely just wait for the course that is going to be announced by Hitesh sir. Coding Tak, I really loved your name. Hello. Yogendra Kumar, hello. Greetings from my side to Anoop as well. And Apki Coding Kaksha as well. Coding Kaksha. Shivam Guglani, happy to have you. Happy to have you guys as well, since I'm loving to interact with you all. So I'm just waiting for everyone to shoot up your questions, and then we are going to talk about it. So I would like to ask you people that what do you think about this incident that recently happened up, where the ransomware was attacking the healthcare cyber sectors, and people's life were on the stake. So this was really a sad incident that happened, and I think it's the high time that people should think about the cybersecurity sectors. People have been thinking about cybersecurity as a real easy peasy stuff, and people are mostly occupied into just the bug bounty. They are just finding the flaws, and they are flaunting on all over their social medias. Like, I found the flaw here, I found the flaw there. But I think right now the quite the amazing emergency that has emerged up onto the cybersecurity is related to the corporate field. People are ransomware is coming up into their system. Corporate people are getting really nasty out there, and they are just demanding some money. And on this verge, where we don't even know anything about crypto. Like, I've been witnessing crypto from like last 10 years. And things were happening at that time, onto the darknet, definitely. And now, even if your ransomware is attacking, and even if you have the money, I'm pretty sure a lot of people in India don't even know how to pay in crypto. And we have seen that the solutions are not coming up from the authorities as well, which is going to be a big issue out there. um, Ashish Nirvikar is saying, is competitive programming mandatory for front end developers? So basically, competitive programming is really a good thing out there. But in order to get started with that, you should really understand that what kind of competitive are you trying to learn, and where are you actually trying to go. If you are looking to go into a small scale company, if you are looking to go into the startup, then I'm pretty sure the DSA guy won't be into the much demand. But if you are going into the Google, ये गूगल की वजह से ही चीज़ें सारी स्टार्ट हुई थी कि हमें कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग चाहिए, डीएसए चाहिए। फेसबुक जैसी कंपनीज थी, बड़ी बड़ी कंपनीज आई, और इन लोगों ने एक तरह से वो एक तरफा ये लोग लेके गए डीएसए को और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग को। अगर हम बात करें स्टार्टअप की, तो उसमें ये चीज़ काम नहीं आती है इतनी। बट लेटर ऑन व्हेन जब प्रोडक्ट बड़ा हो जाता है, तो फिर आपको डेफिनेटली वहां पे जॉब निकल सकती है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि सारे बच्चे गूगल और फेसबुक तक नहीं पहुंच पाते हैं, जो कि सबसे बड़ा इशू हो जाता है। मेहनत करके आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग भी करते हो, आप डीएसए भी करते हो, फुल मेहनत से करते हो, सारी चीजें स्किल भी कर लेते हो, बट यू आर नॉट अप्लाइंग एट द राइट कंपनीज। एक जो स्टैक है अपनी टेक्नोलॉजीज का, वो आप वहीं अप्लाई करो जहां पे उसकी वर्थ हो। अगर आप एक छोटे से स्टार्टअप में जाके बोलोगे कि मुझे डीएसए आता है या कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग आती है, तो उन लोगों के लिए वो चीजें यूजफुल ही नहीं है।
सो बेसिकली आपकी स्किल है उसको पहचानो एंड understand your worth and don't accept the less and try to get the knowledge according to that. हाउ टू स्टार्ट साइबर सिक्योरिटी टेक्निक. सो साइबर सिक्योरिटी में कोई टेक्निक नहीं होती है. इसमें बेसिकली हम लोग फ्लॉज निकालते हैं और बहुत सारे मिटिगेशन निकालते हैं. तो ये टेक्निक से कभी नहीं होता. टाइम इज गॉन जब वन क्लिक करके टूल से हम बहुत सारी चीजें हैक करते थे. एसक्यूएल मैप जैसे बहुत सारे टूल है. बट आई रियली बिलीव कि ये जो पुराने अटैक्स हैं ये आज से 5-10 साल पुरानी कहानी है. आजकल लोग टोकन्स में खेल रहे हैं. आजकल लोग क्लाउड पे चल गए हैं, एज्योर पे चल गए हैं. सिक्योरिटी बहुत नेक्स्ट लेवल जा चुकी है अब. तो आई बिलीव कि मतलब you should really think out of the box in order to achieve something really good out there. And then we have Mysterian Am. Hi, it's scary. Yes, Abhishek, it's definitely scary. And I believe, when we are moving into the world of metaverse, I'm pretty sure cybersecurity has just now got started. Metaverse ke andar, if you are, buying your own place, if you are, people are displaying the hoardings. Like I was playing one metaverse game where I could see the Visa hoarding out there, and they have, paid the hefty of amount in order to put that Visa hoarding into that metaverse. So people are buying things, people are selling things on metaverse, which leads to the high chances where people can get attacked by a lot of insecure things out there. So metaverse is a big story where security is going to be a very big concern for sure. For sure. Some people say that security, the cyber security thing is going to end up within like next couple of years. But I really believe cyber security is never going to get over, because things are going to shift up. जैसे ही नई नई टेक्नोलॉजीज आएंगी, एआर आएगा, ऑगमेंटेशन रियलिटी आएगी, उसकी इम्प्लीमेंटेशन आएगी, चीजें डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आगे मूव होगी. एंड मेटावर्स के लिए भी आई बिलीव इट इज गोइंग टू बी अ बिग टास्क टू टेक केयर अबाउट द सिक्योरिटी, बिकॉज कहीं पे भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, चीजें लोग खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो यस, मेटावर्स के लिए भी काफी प्रॉब्लम आएगी. तो आई एम रियली एक्साइटेड टू सी दैट वेयर दिस साइबर सिक्योरिटी इज गोइंग टू एंड अप. आई बिलीव साइबर सिक्योरिटी जैसे ही मार्केट में आई थी, देखो जहां डेटा है वहां साइबर सिक्योरिटी है. बट ये चीज फिक्स है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती जाएगी, हम अगर इवॉल्व होंगे तो साइबर सिक्योरिटी का कभी एंड नहीं आएगा. दैट्स आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट. Please tell us about dark web. So dark web, accessing dark web is definitely not illegal, but dark web पे I don't think so हर किसी को access करना चाहिए. Definitely there are a lot of big profile hackers that are already active there. So if you don't know much about security, then I don't recommend you to access the darknet. That can be really scary for you. So I believe you should stay away with that. What's on Facebook down last month? सो फेसबुक डाउन इज नॉट अ बिग थिंग आउट देयर. देखो, एक प्रोडक्ट होता है, उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रोडक्ट चलता है, नहीं चलता है, वो सारी प्रॉब्लम चलती रहनी चाहिए. तो मेरे ख्याल से जो 6-7 घंटे का ब्रेकडाउन हुआ था, आउटरीच हुआ था फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, जिसकी वजह से डाउन थे, दिस इज अ यूजुअल पार्ट. देखो, हमारी भी ऐप डाउन होती है कभी कभार, बट हमारे पास अभी इतना ट्रैफिक नहीं है. बेसिकली अबाउट थाउजेंड्स में अभी हमारे हैं सब्सक्राइबर साइबर काउंसिल पे. तो वो 1 मिनट के लिए डाउन होती है कई बार, या 10 सेकंड के लिए डाउन होती है. तो ये प्रोग्रामर्स का पार्ट है, हमें इसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, या उसके बारे में कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं निकालनी चाहिए. यूजुअल सर्वर मेंटेनेंस हो सकता है, सर्वर की कैपेसिटी बढ़ाई जा सकती है वहाँ पे, तो उसकी वजह से आउटरीच हो सकता है. सो दैट्स अ यूजुअल पार्ट फॉर आईटी पीपल. आई डोंट गेट एक्साइटेड एनीमोर व्हेन पीपल से कि ओह गूगल वाज हैक्ड, ओह व्हाट्सएप वाज हैक्ड. नो, दिस इज अ यूजुअल स्टफ. दिस इज अ प्रोग्रामिंग, एरर्स भी आएंगी, डाउन भी होएगा, सारी चीज़ें होंगी. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई डिड दैट हैपन. And as far I remember, Facebook officials has given you this statement as well कि उनकी कुछ server upgrades थे. And C name, A name जितना उन्होंने limited दिया, उससे लोगों ने logic बनाया. And basically it was just a server upgrade, nothing much hi-fi. But Facebook है, WhatsApp है, तो मीडिया भी पकड़ेगा, आसपास के लोग भी पकड़ेंगे. और आजकल डेफिनेटली ये मीम का तो जमाना बहुत तेज है ही. मतलब पीपल, इट्स इजी फॉर पीपल टू मेक मीम्स. सो यस, बड़े ब्रांड्स है तो उनको मीम भी झेलने पड़ेंगे. सो दिस इज what is happening. So thoughts on worst top 10 for 2021. So we have CSPE 2.0 coming up for the latest OWASP versions. Like I still remember CSPE 1.0 was there, and I was teaching those attacks from like 2 to 3 years. Then I discovered that things need to get upgraded, right? OWASP top 10 है, पुराना SQL injection union based. I don't think so वो चलेगा बहुत सारी जगह. सो आई रियली थिंक कि अब नेक्स्ट लेवल चीज़ें आ गई हैं. पीपल यूज टू इंटरसेप्ट द रिक्वेस्ट, एंड रिक्वेस्ट के अंदर इंटरसेप्ट करके वो बहुत सारी चीज़ें डाल लेते हैं.
उसके भी अंदर की चीज़ें आ गई है, अब लोग टोकन तक पहुँच गए हैं। तो यू नीड टू अपग्रेड योरसेल्फ। अगर पुरानी चीज़ें पढ़ते रहोगे आप, तो मेरे ख्याल से चीज़ें आपको ऐसा लगेगा कि इसमें फ्यूचर नहीं है। बट फ्यूचर हर जगह है, आपको बस अपग्रेडेड रहना है। आई एम प्रीटी श्योर जैसे ही आप लोग प्लेसमेंट्स लेंगे, आप कोई भी प्रोडक्ट डेवलप करेंगे, तो एक कंपनी ज़रूर होती है, जो आपको तंग करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ यू आर गोइंग टू गो इन एनी बिग शॉट कंपनी, तो केपीएमजी जैसे जॉनसन एंड जॉनसन के लिए करती है ऑडिट, एंड आपका डिलॉयट हो गया, और बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ है जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स को वहाँ पे उनकी ऑडिट करती है। तब फिर डेवलपर को बहुत गुस्सा आता है। बोले काश मैं ये सिक्योरिटी की थोड़ी-सी चीज़ें पढ़ लेता, तो आज ये जो फ्लॉज़ निकाल के दे रही है मुझे साइबर सिक्योरिटी कंपनी, बिकॉज़ बड़े प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं तो वो पहले टेस्टिंग उसकी होती होती है। पहले टेस्टिंग होती है, उसके बाद सिक्योरिटी की भी टेस्टिंग होती है। तो उस टाइम पे एक डेवलपर इरिटेट होता है। फिर वो सोचता है कि काश मैंने ये चीज़ें पढ़ ली होती। तो उस चीज़ को अगर रेक्टिफ़ाई करना है, तो मेरे ख्याल से सिक्योरिटी भी आपको लेके चलनी चाहिए। पुराने ज़माने के सिक्योरिटी में इफ आई से कि एक डेवलपर है, उसको सिंपल एक फ़ाइल अपलोड डालना है कहीं पे, कि मान लो कि आपकी कोई प्रोफ़ाइल पिक्चर अपडेट करनी है, कुछ ऐसा काम करना है। तो उसमें क्या है, अगर पुराने तरीके से उसने उसका कोड लिख दिया, उसके कोड लिखने में ही फ्लॉ है, उसने कहीं पे भी फ़िल्टर्स ही नहीं लगाए जेपीईजी, पीएनजी वगैरह जैसे कुछ, तो डेफ़िनिटली प्रॉब्लम आएगी। तो बेसिकली आपकी कोड लिखने के अंदर कितना फ्लॉ है, उसके बेसिस पे हम लोग खेलते हैं। तो येस, साइबर सिक्योरिटी भी अगर स्कूल के साथ या कॉलेज के साथ हो जाती है, तो आप सिक्योर तरीके से कोड लिखना सीखोगे, तो येस डेफ़िनिटली फ्यूचर बढ़िया है। एंड ये जब आप एक अच्छे डेवलपर बन के बैठे होंगे किसी कंपनी में, तो एक साइबर सिक्योरिटी की कंपनी आपको परेशान नहीं करेगी, और नए-नए आप अपग्रेड होते रहोगे। हैव यू एवर यूज्ड डार्क वेब फॉर एनी ट्रांज़ैक्शन? सोहिल धौलपुरिया, तुम्हें लगता है मैं यूट्यूब लाइव पे आके बोलूँगा कि हाँ, मैंने डार्क नेट पे ट्रांज़ैक्शन किया है? आई डोंट थिंक सो, मैं ऐसा आके यूट्यूब पे बोलूँगा। सो आई डोंट थिंक सो आई एम गोना गेट स्टक इन योर वर्ड्स, साहिल। Unknown YouTuber, sir, I wanna make up MP3 to MP4 converter. Which language I need to learn? भैया पहले बताओ, सर बोलोगे भैया बोलोगे, बट चलो ठीक है, दोनों में चलेगा अपने को। बट आई रियली थिंक सो पाइथन इज क्वाइट ईजी, यू कैन गो फॉर द Django framework, it's quite easy out there. बीसीए 5 ईयर प्लीज थिंक ओवर एंड्रॉइड एप्स। मैं क्वेश्चन ही नहीं समझ पाया ये तो। बीसीए 5 ईयर प्लीज थिंक ओवर एंड्रॉइड एप्स, आई डोंट थिंक सो। बट yes, if we talk about the Android, then I really believe Flutter is one of the finest choice, where you can develop the apps for your mobile phones, you can develop the apps for your iOS at the same time. So Flutter is going to be a very amazing technology. I still remember the time Flutter हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा ही था, जैसे ही वैसे ही नया नया आया था Flutter। डॉक्यूमेंटेशन में बहुत हालत खराब हो जाती थी। एक भी प्रोडक्ट हम लोग कुछ बनाते थे, तो उसका सपोर्ट ही नहीं मिलता था कम्युनिटी से। बट देन फ्लटर अब तो इवॉल्व हो गया है काफ़ी, एंड बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो फ्लटर पे काफ़ी अच्छे से मूव कर रहे हैं, क्योंकि कोड कम लिखना पड़ता है, लीस्ट कॉम्प्लिकेटेड है, कंपैटिबल बहुत है, डिज़ाइन बहुत अमेजिंग है उसका। तो इस फ्लटर इज़ वन अमेजिंग थिंग दैट यू शुड लर्न इन ऑर्डर टू डेवलप द एप्स फॉर एंड्रॉइड एंड आईओएस। एंड डेफिनेटली देखो, फ्लटर ने एक और चीज़ सॉल्व करी है। देखो, एक डेवलपर होता था, पहले क्या होता था कि वो आईओएस का भी डेवलपर होता था, वो एंड्रॉइड का भी डेवलपर होता था। अब आईओएस का अलग से डेवलपर लेके आते थे, एंड्रॉइड का एक अलग से डेवलपर लाते थे। अब कंपनी क्या करती है, फ्लटर का डेवलपर लेके आ जाती है, उनकी कॉस्ट कटिंग हो जाती है। आईओएस भी बना देता है, एंड्रॉइड भी बना देता है। तो दैट इज़ गोइंग टू बी मच बेटर थिंग। सो डेड शॉट इज सेइंग, एक तो नाम बड़े जबरदस्त, मतलब सब लोग क्या एक वो अनोनिमस वाला अकाउंट रखते हैं यूट्यूब पे एक्सेस करने के लिए, एक नॉर्मल वाला, ऐसा ना। तो डेड शॉट बोल रहा है कि भैया बीटेक में कंप्यूटर का क्यों सा पार्ट ले। I think you should write your question again. So, what about crypto? Is it a bubble? I don't think so. Crypto is a bubble, but you should be very careful about crypto. I still saw last time there was. Can you guys tell me which was uh, that movie, that TV series was there? What that was quite famous on Netflix out there, whose token was there, and there was a lot of uh, chaos over there. सो आई थिंक इट वाज स्क्विड गेम, एंड स्क्विड गेम में हम लोगों ने देखा था कि जैसे मैं उसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ रहा था, इवन आई वाज प्रीटी अमेज्ड। अब देखो, ये जो स्क्विड गेम वगैरह जैसी करेंसीज हैं, ये आपके कभी बाइनेंस या कोई भी इंडियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म या यहाँ पे कभी भी नहीं आएंगी। यूनिस्वैप नाम का प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे ये सारी चीज़ें आती है। तो स्क्विड गेम्स में तुम लोगों ने देखा था कि उसका डेवलपर का कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है ठीक से, ना कोई गिटहब का प्रोफाइल है, उसने लॉन्च कर दिया है ठीक से, वेबसाइट वगैरह कहीं कुछ ठीक से दिख नहीं रही है। लोगों ने स्क्विड गेम का टोकन खरीदा वहां पे, एंड देन फिर ओवरनाइट वो नीचे बम्प हो गया था। तो एक बार आप पहले देखो कि अगर किसी करेंसी की क्रेडिबिलिटी है, तो उसमें पैसा लगाने में मजा है, नहीं तो फिर आप यही रहोगे। और यूनिस्वैप पे तो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है,
बहुत सारे कॉइन्स आते हैं, बथेरी चीज़ें होती हैं वहाँ पे। तो इट्स नॉट बैड आप क्रिप्टो में पैसा लगा रहे हो, बट आई थिंक यू शुड टेक द प्रॉपर नॉलेज कि अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन देखो, उसकी ग्रोथ देखो, आप अच्छे से कॉइन गेको पे जाके उसके रिकॉर्ड्स देखो, पहले क्या कर चुकी है, कितना मार्केट कैपिटल है उसका। तो ये बहुत सारी फैक्टर्स है। आई डोंट थिंक सो क्रिप्टो इज़ अ गेम ऑन फ़ोन कि मतलब आज मैंने फ़ोन निकाला, आज मैंने ये करेंसी खरीद दी, ये सब बकवास है। आप बैठो उसकी रिसर्च करोगे तो आपको कुछ निकल के आएगा। अगर आपको लग रहा है कि क्रिप्टो इतना ईज़ी है कि फ़ोन पे हम कुछ भी कर रहे हैं और क्रिप्टो निकल रहा है, आई डोंट थिंक सो दैट इज़ अ गुड थिंग। इवन आई हैव इन्वेस्टेड ऑन सम ऑफ द करेंसीज़। लियोन काफ़ी अच्छी करेंसी थी जिसमें हम लोगों ने स्टार्टिंग में इन्वेस्टर टाइम पे हम लोगों ने उस पे व्हाइट लिस्ट होके और हम लोगों ने वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया एंड देन वी मेड इनटू 3 टाइम्स। So that was a good thing out there. We were not onto the trading market. We are on a level up. तो वो चीज़ें आपको देखनी चाहिए जल्दी से। एंड देन वी हैव मोर क्वेश्चंस कमिंग अप। भैया आई वांट मेक ये तो MP3 का बना के ही रहेगा कन्वर्टर। और सर व्हाट अबाउट क्रिप्टो, ये मैंने रिप्लाई दे ही दिया। एनी सजेशंस फॉर BCA स्टूडेंट्स? सजेशन रिगार्डिंग व्हाट? आई मीन work every day, learn every day. That's the only suggestion that I can give you in a straightforward words. Please go for Android apps. I just gave you the description related to Flutter. Then I think you should really watch that. Hi Sahil, I'm glad I still remember you. I hope you're doing fine. And Abhishek, Skip Games. Okay, so we have more questions from Arshit Chauhan. Hello, it's me, Saksham Bhai, programmer versus hacker. I hope you never forget. Yes, I do remember your comment on my Instagram. I have a very good memory out there. So that's your real name, I guess, Arshit. I still remember you. Krishna Kamal, hi Bia, how was your Diwali? Was amazing. We were having fun at home, like all the time, like every year. We always gather up at home and then we have quite a fun. Hi, Dada. I think you must be somewhere from Kolkata. Rohan, I'm good. I think आप भी अच्छे होंगे. What to do to get job as a network administrator? For the network administrator, I think you should go for RHC kind of stuff. Red Hat certified engineers. They are quite good out there in giving you the control over the networks and the different computers out there. A network administrator has a very hard kind of job. Until and unless the cybersecurity guys are not there, network administrator is going to stay a level back. For example, if we are putting any endpoint security, the network administrator is going to watch from his system कि बाकी के systems पे क्या क्या हो रहा है। तो वो चीज़ें नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को देखनी पड़ती है, एंड पॉइंट सिक्योरिटी लगानी पड़ती है हर सिस्टम में। बिकॉज़ आप कॉर्पोरेट में मूव करोगे तो वहाँ पे तो ये भी पता लगता है कि किसने पेन ड्राइव लगाया है कॉर्पोरेट के सिस्टम ने, किसने पेन ड्राइव निकाला है, कैसे क्या चीज़ें करी है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी लोग देखते हैं, तो वो चीज़ें नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर अच्छे से मॉनिटर करता है एंड देन फिर वो प्रोसीड करता है। तो आई गेस you should go for Reddit certified engineer kind of courses that are related to Linux. Have you watched Billion Dollar Code on Netflix? Yes, I have definitely watched the Billion Dollar Code on Netflix that is related to the Google. I still remember the godlike algorithm that we are still praising, but understand that is nothing more than a code. And I have seen this SEO guides and all. These SEO and all are nothing. Mostly the non-technical people are proceeding towards SEO, which is a big game. So SEO is nothing, just the documentation of what a programming is writing in the algorithm. So that's quite a fun out there to play around with people, that what is happening out there onto the platform. It's a fun out there. Which platform we use in React Native versus Flutter? I think React Native is also good. Flutter is also good. It depends. I think Flutter is more trendy and easy, but still React Native, you cannot say anything bad about React Native. That's good for sure. Should I use Mongoose over MongoDB? I think MongoDB is still a better choice over the Mongoose. Elon Musk pumping Shiba Inu. Elon Musk keeps on pumping everything. Elon Musk ने तब पंप नहीं किया जब बेयर लगा हुआ था. अब दोबारा से बोला गया तो Elon Musk भी पंप कर रहा है. So this is how it goes. Don't get influenced. Do your soul research, code research in order to invest in crypto. But is the world moving towards crypto for each nation separately currencies? Yes, undoubtedly, the world is moving towards the next level of internet, that is the metaverse, the next layer to give you the more realistic experience in front of this 2D screen. So people, Steve Jobs came up, he made people lazy. He restricted people to use your thumb every day. Now, in today's life, people are using thumb every day and they're just moving thumb every day. It is in their habit. Now,
after Steve Jobs, after getting people addicted from the thumb, Instagram came up, Facebook came up. They are still making people addicted from thumb, and now the Mark Zuckerberg is coming up with metaverse, and he's cutting your thumb. So this is the methodology to make humans lazy. So these are the facts that I would like to keep in front of you. Okay, so cybersecurity versus development. I'm confused. Help me. I think development and cybersecurity. If you don't know how to create something, you cannot destroy that for sure. So I think to create a thing securely, you need to understand the development as well. And as a mitigation, you can learn for the cybersecurity as well. So आजकल गया टाइम कि सिर्फ एक चीज आप सीख लोगे तो आपकी लाइफ बन जाएगी, ऐसा नहीं होता है। आपके टाइम पे आपको बहुत सारी मल्टीपल चीजें सीखनी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा चीज़ें सीखोगे, एक साथ कंपनी को आप बता पाओगे कि मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, और उस चीज़ पे आपको अप्रेज़ल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट ईयर में बैठ गए और सोच लिया कि मुझे 5 लाख का प्लेसमेंट तो एटलीस्ट चाहिए, या मुझे 10 लैक्स पर एनम का प्लेसमेंट एटलीस्ट चाहिए। आप उतनी वर्थ खुद की क्रिएट करनी पड़ेगी आपको सीख-सीख के, ताकि आप कंपनी को बोलो कि मैं इसका भी काम कर सकता हूँ, मैं इसका भी काम कर सकता हूँ, इसलिए मुझे इतना प्लेसमेंट वर्थ लगता है। तो फिर आप सेटल होगे अच्छे प्लेसमेंट पे, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। भैया बीटेक में सीएसई से क्यू का कोर्स करे, जो बेस्ट है अपकमिंग लाइफ में। आई थिंक ऑल द टेक्नोलॉजीज आर बेस्ट, पीपल आर स्टिल यूजिंग ASP.NET as well, that is quite outdated, but still people are using it. So I think it's all about getting a mastery in some of the technologies. I think you should spend some of your time, at least साल भर तो आप बिताओ किसी टेक्नोलॉजी में, तब आप बोल पाओगे कि हाँ मुझे ये चीज आती है। अगर आपको लगता है 2 महीने के क्रैश कोर्स, like the people are doing, even I say I don't teach people within a month, but I tell them the resources to teach yourself for the rest of the year. That's what we do in our courses. So 1 महीने में या 2 महीने में या 8 घंटे के या 18 घंटे के वीडियो कोर्स में आप मास्टरी नहीं कर पाओगे। आपको समय बिताना पड़ेगा, आपको कम्युनिटी पे बैठना पड़ेगा, आपको गिटअप पे बैठना पड़ेगा, आपको बहुत सारे कोड देखने पड़ेंगे, कोड शेफ की चैलेंजेस आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। ये सारी चीज़ें आप करोगे, उसमें आपका पूरा साल बीत जाएगा। फिर नया अपग्रेड और आता है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हर साल एक नया लाइब्रेरी आता है। वो नई लाइब्रेरी भी आपको सीखनी पड़ेगी, ताकि आप बोल सको लोगों की कि हाँ, मुझे ये भी आता है, मैं ये भी बना सकता हूँ, मुझे वो भी बना सकता हूँ, मुझे वो चीज़ भी आती है। सो या दिस इज़ हाउ यू शुड प्रोसीड। Tips to become a successful pen tester. I think you should first choose the domain, the networking, or the web, or like the system security, and then you should master on it. So yeah, making staying focused is really important out there, whether it is pen testing or it is a programming. What is the difference between security researcher and hacker? Hacker तो वो होते हैं जो 12वीं क्लास में या बेबी छठी क्लास में, सिक्स क्लास में बोलते हैं ना कि मैंने हैकिंग पढ़ ली, मैंने सीख ली। वो लोग तो हैकर होते हैं। और जो कॉर्पोरेट में जाके अच्छे से ऑडिट करते हैं, बहुत अच्छी जगह पे अच्छे अच्छे बग रिपोर्ट करते हैं, उन लोगों को हम लोग साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर बोलते हैं। सो यू शुड डिसाइड योरसेल्फ कि आप हैकर हो या साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर हो। Why you ignored my message, Anonymous King? I'm really sorry. Please write your message again. Anonymous के भाई BCA फिफ्थ सेम में प्रोजेक्ट का कोई आइडिया दे दो। क्यों Anonymous King, प्रोजेक्ट का क्यों आइडिया दे दो? आई स्टिल रिमेंबर द टाइम व्हेन स्टीव वॉजनिक वाज सेइंग कि इंडिया में क्रिएटिविटी नहीं है, जिसका इंडिया वालों ने बहुत जोर से बवाल बनाया था। आपने फिफ्थ सेमेस्टर तक निकाल दिया बीसीए, आपको एक प्रोजेक्ट का भी आइडिया नहीं है। शुक्र है आपका नाम कुछ और है यहाँ पे, इसलिए मैं आज और फ्रीली भी बात कर रहा हूँ। तो अनोनिमस किंग, आपने 5 साल बिता, मतलब 5 सेमेस्टर बिता दिए, अभी तक आपको यही नहीं पता कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, कौन सी टेक्नोलॉजी में है, उसका प्रोजेक्ट क्या बनाऊं। तो मैं यहाँ पे आपको स्पून फीडिंग दूंगा तो उसका कोई सेंस नहीं है। देखो, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम सभी बनाते हैं कॉलेज में, नहीं बनाना चाहिए। वीएलसी मीडिया प्लेयर भी एक प्रोजेक्ट था जो कॉलेज के लोगों ने ही बनाया था, आज वर्ल्ड वाइड फेमस है। ये बनाना चाहिए। मेरे ख्याल से उस पाथ पे हम लोगों को मूव करना चाहिए थोड़ा थोड़ा। And your word on next.js. Next.js is amazing, but still I cannot give you the final and the good words until the community support is out there for next.js. So where should I start? Roadmap for MC guy who don't master in one technology. I think you should first of all get focused towards one technology. Means what is turning you on? Android apps, or is it the mobile phones, or is it the websites, or is it the backend, or is it the algorithm? Like you should get fascinated towards the technology. Why are we here today? Why do you choose computer science? Why do you choose BCA? Because you're fascinated with this term called as technology.
If you are not getting fascinated, that is the sole reason why you are not doing anything. So make sure you understand that why did you decided to opt for a course, whether it is BCA or BTech, and then you should proceed further. College courses got enough for future. See, all the college courses are giving you a fixed curriculum. That's pretty much okay. That's good. But I think you should learn something extra. You should learn something extra, and your college is never going to ask you to learn something extra. You will have to do that. As far I remember, even I learned cybersecurity and these programming things because I was curious towards technology. That was my passion. I don't care what people are teaching me. This is what where I'm going to make my future. On this urge, I started learning cybersecurity. So now it's your wish. If you just wish to follow the curriculum, which is definitely not enough to get placed in the companies these days, or you wish to proceed further. एंड देन असम में कोविड की वजह से सब कुछ डिस्ट्रॉयड है। सेकंड सेम से फिफ्थ सेमेस्टर तक ना क्लास हुआ है ना एग्जाम, बिना एग्जाम और बिना क्लास के फर्स्ट सेमेस्टर से डायरेक्ट फिफ्थ सेमेस्टर। नाउ दिस इज वन ऑफ द वेरी डिजास्ट्रस effect that we are witnessing after the corona, which is quite serious out there. But if things are getting hard, you should keep on trying. It's never too late to start again. I really hope for Assam that things may get things may get better as soon as possible. All my wishes are with you. You can drop me a message on Instagram if there is something that I can do for you. I'll definitely give you the resources, and make sure you start something. Start something. That's okay. Something happened, something disastrous happened in Assam, but yes, you should get started as soon as possible. You're ready. Just jump onto the learning path. You are way behind. If you are going to go on Google, suppose you are going to go in Google California someday for an interview. You cannot say that this happened with me or that happened with me. This corporate world is quite strict out there. People don't listen to the excuses because they are there to make some money out there. So definitely you just get started as soon as possible. सो व्हाट आई लर्न नेक्स्ट, इफ आई कंप्लीट सी लैंग्वेज बट मुझे सी प्लस प्लस नहीं करना है, बोरिंग हो जाता है क्योंकि कुछ अच्छा नहीं बना सकते, तो मोटिवेशन में नाउ दिस इज प्रीटी मच ट्रू। अगर आपने कोई चीज़ सीखी और उसका इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं देखा, तो दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ बोरिंग। एक प्रोग्रामिंग की जो चीज़ है वो लोग सिखाते रहते हैं, वही लूप है, वही आपके ऑपरेटर्स हैं, वही सारी चीज़ें हैं, बस उसका इम्प्लीमेंटेशन अगर आपने नहीं देखा तो वो डेफिनेटली बोरिंग हो जाएगा। तो आई थिंक यू शुड स्विच योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आई बिलीव। आप बस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उनके सिंटेक्स के लिए मत सीखो। आई रियली बिलीव यू शुड गेट स्टार्टेड विद समथिंग सटल, राइट? एंड्रॉइड एप्स बनाने बहुत हैपनिंग है, वेबसाइट्स बनाना बहुत हैपनिंग है। इनफैक्ट इवन इफ यू आर लर्निंग जावा, you can definitely make a very good software out of it. I made clock out of it. I made a lot of calculators can be made out of it. So yes, I think you should really go towards a practical learning, I believe. ओके, रिएक्ट जेएस इज गुड। रिएक्ट जेएस के बिना आजकल फ्रंट एंड एकदम अधूरा है। HTML CSS तक ज़माने अब हट गए हैं, सास आ गया है CSS की जगह, तो वो आपको आना ही चाहिए। एंड रिएक्ट के बिना आप बोल ही नहीं सकते आपको फ्रंट एंड आना है। बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी सब इंपोर्ट करे जा रहे हैं, मुझे भी पता है, सबको अच्छे से पता है, सारी कंपनीज को भी पता है, बट रिएक्ट नहीं है तो उसमें एक एक्स्ट्रा टच नहीं आ रहा है, एंड डेफिनेटली वो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगेगी। सो रिएक्ट इज वन ऑफ द नेसेसिटी फॉर फ्रंट एंड डेवलपर्स दीज डेज। Okay, so sir, you know Aditya Shinde. Yes, I must be knowing him. And Devesh Kumar is saying, can you see my message? Devesh says, भैया जावास्क्रिप्ट की प्रैक्टिस के लिए कोई वेबसाइट सजेस्ट कर दो। जावास्क्रिप्ट की बहुत अमेजिंग एक सीरीज है तेज सर की, so I think you should really watch that. How to start journey as a full stack developer and cyber security. So जो चीज़ उर्मिल आपने लिखी है बहुत इजीली 2 लाइन में, उसके पीछे लोगों को 2 से 3 साल लग जाते हैं। सो आई बिलीव यू शुड स्टार्ट वॉचिंग माई वीडियो ऑन हाउ टू बिकम अ फ्रंट एंड डेवलपर, फिर उसके बाद बैक एंड डेवलपर, फिर उसके बाद साइबर सिक्योरिटी में आप मूव करने चाहिए। सो दिस इज गोइंग टू बी द थिंग। वेब पेन टेस्टिंग, एंड देन फिर उसके बाद स्मॉलर देन वेब पेन टेस्टिंग इज स्मॉलर देन एंड्रॉइड पेन टेस्टिंग, इज दिस राइट सर?
So I think web pen testing. I think Android pen testing is the future. But basically, Android pen testing is not coming up on a very transparent level like the web pen testing is coming up. So I think जो Android pen testing है, it has a very good and wide scope because people started finding bugs on website. Now I'll tell you how this all started. People started finding bugs on website. जो website दिखती थी वहीं पे command fire करके bugs निकाले. फिर वहाँ पे बग्स लोगों को मिलना नहीं चले, फिर उसके बाद लोग इंटरसेप्ट करने लगे रिक्वेस्ट, वहाँ पे लोग बग्स निकालने लगे, फिर वहाँ पे नहीं मिलने लगे, अब लोग टोकन के अंदर चल गए। टोकन के अंदर क्यों चल गए? क्योंकि एपीआईज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है आज के डेट में। तो एपीआई को टोकन के अंदर हम अच्छे से पकड़ सकते हैं और मैनिपुलेट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ से निकलवा सकते हैं। तो अब लोग अंदर जाए जा रहे हैं एज़ पर देयर नॉलेज। सो मेक श्योर यू जस्ट गो ऑन अ राइट पाथ। Good afternoon, sir. Happy to see you again. Happy to see you as well. Instagram ID, my Instagram ID is Saksham the Computer Guy. I'm quite active out there. So you can just go ahead and follow me on my Instagram. That is Saksham the Computer Guy. Exact username that is here on to the YouTube. Any best research to do DSA in JavaScript? In Java, I think again we have a course on Learn Code Online related to DSA. So you should really explore that. What's the future of cloud computer? Cloud computing is the next future. अब वो ज़माना जाने वाला है जब लोग इधर-उधर से होस्टिंग खरीदते थे 1 जीबी की, 2 जीबी की। अब जैसे ही एक छोटी-सी ऐप लाइक सपोज़ इवन इफ वी आर देयर, साइबर काउंसिल की ऐप है, हम कोई भी लोकल जगह पे होस्ट नहीं करते, वी होस्ट इट ऑन क्लाउड। सो अगर आपका एक स्टार्टअप है और मान लो कि आपकी एक नॉर्मल सी वेबसाइट आपको बनानी है, किसी का पोर्टफोलियो टाइप वेबसाइट बनाना है, तो वहाँ तक चल जाती है होस्टिंग। बट अगर आपको एक प्रोडक्ट डेवलप करना है, आपको सच में एक ऐप निकालनी है मार्केट लेवल पे, so I believe cloud is the only necessity. So I think there is a great future of cloud. एंड क्लाउड की ये बहुत अच्छी चीज़ होती है कि अगर आपने क्लाउड अच्छे से सेटअप नहीं किया तो इतना सारा बिल आता है कि मतलब आप बोलोगे कि इतना बड़ा बिल कैसे आ गया? तो उसके लिए भी अच्छे से ऑडिट होती है क्लाउड की, तो वो चीज़ भी देखने लायक है। Hi, just wondering if a self-taught guy can switch careers and get a job as front-end developer? Yes, no doubt, no doubt. Most of the programmers, the good programmers, are self-taught only. So yes, everything is available out there. बेसिकली क्या होता है, देर आर अ लॉट ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज। वो क्या करते हैं, वो आपका एक्सपीरियंस भी लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ like I'm doing I'm into the information security and cyber security from like 5, I have experience of 5+ years। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, जिससे बेसिकली आपके पढ़ने का टाइम कम हो जाता है। वीडियो कोर्सेज कौन से अच्छे होते हैं? जो आपका टाइम कम करे, जो आपके लूपहोल्स निकाले बहुत सारे। सो यू नो आप एक्सपीरियंस शेयर करते हो बहुत सारे इंस्ट्रक्टर्स को देख के, वो आपका टाइम बचाते हैं, तो वो एक अच्छा इंस्ट्रक्टर है और वो एक अच्छा कोर्स है। अगर वो आपका टाइम नहीं बचा रहा, वो कोर्स फॉलो करके भी आप पिटफॉल्स में जा रहे हो, एरर्स आ रहे हैं बहुत सारे, तो वो अच्छा कोर्स नहीं है। सो बेसिकली एक अच्छा कोर्स या अच्छा इंस्ट्रक्टर उसके एक्सपीरियंस से सिर्फ आपका टाइम कम कर सकता है, ताकि आप लूप होल्स या पिटफॉल्स में ना गिरो। बट सीखना आपको खुद ही पड़ेगा। सो दैट इज अगेन अ सेल्फ टॉट फंडामेंटल। आपकी बस कोई हेल्प कर सकता है, सीखना आप ही को ही पड़ेगा। Is web development a good career or not? Devesh, CAREER. So make sure web development, yes, web development is a very good career. It's not a career. So web development में आप front end and back end की तो बहुत ही ज़्यादा demand है आजकल. But yes, web development is a good thing, and next big thing is going to be apps. जैसे ही वेबसाइट हर जगह हो गई थी, वैसे ही now I can really predict कि apps हर जगह होंगी. So applications is going to be the next big thing that people are going to run behind. और जब तक लोग एप्लीकेशन के पीछे भागेंगे, एंड्रॉयड ऐप्स के पीछे भागेंगे, तब तक मेटावर्स रेडी हो जाएगा। सो पीपल विल बी प्लेइंग इन ऑगमेंटेशन रियलिटी वाले फंडे में। तो ऑगमेंटेशन रियलिटी इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट नेसेसिटी। सो चीजें आती जाएगी, जाती जाएगी, एंड वी आर गोइंग टू सी दैट हाउ द इंटरनेट इज गोइंग टू गेट इवॉल्व। Tell us something about Salesforce development and its future and how to make career in it. I think Salesforce is a good option for the people who are not much interested into the programming. So Salesforce is a solution where अगर मान लो कि जैसे 10 आउटलेट्स हैं डोमिनोज के, उसको एक साथ हर जगह बिलिंग दिखानी है और एक जगह ही डेटा रखना है बहुत सारा, और कहीं से भी कोई भी एक्सेस कर सके। कोई रिकॉर्ड्स रखना है, जैसे डोमिनोज पे आप कॉल करते हो तो आप रिपीट कस्टमर होते हो तो तुरंत पता लग जाता है। तो आई बिलीव सेल्स फोर्स वहाँ काम आता है। सेल्स फोर्स के बहुत इम्प्लीमेंटेशन है, बहुत सारी जगह पे सेल्स फोर्स चल रहा है। तो यस, सेल्स फोर्स इज गुड ऑप्शन इफ यू आर नॉट मच अमेजिंग आउट देयर इनटू द प्रोग्रामिंग।
Vamshi Krishna is saying, I need offline cybersecurity course. We are going to launch the offline cybersecurity course in the summers. So make sure you keep an eye on us and make sure you follow me on Instagram. That is Saksham the Computer Guy. So I'm learning web development from last 2 years and currently I'm in the fixed in sixth semester. But सबकी आंखें sixth semester में खुलती है मुझे ऐसा लग रहा है. But I never did DSA part, but recently I started it. So I want to know how much time it will going to take to be good in DSA. So आप DSA कौन सी language का सीख रहे हो? That is going to be important. And yes, DSA is going to देखो how much time I cannot tell you, but I can tell you if you are going to solve सिंपल सा फंडा है हर टेक्नोलॉजी का 1000 प्रॉब्लम सॉल्व करने का टारगेट रखो 1000 प्रॉब्लम सॉल्व करिए एंड डेफिनेटली यू नो अ लॉट देन सो टारगेट रखो कि कितनी चीजें आप सॉल्व करोगे तो उसके ऊपर चीजें ज्यादा जल्दी सीख पाओगे आप सो टारगेट रखने का तरीका अच्छा होना चाहिए और टाइम मैनेजमेंट तो देखो चलता रहता है लाइफ में अब चीजें बहुत फास्ट हो गई है लाइफ में तो जितना टाइम मिले उतना ज्यादा डालो उतना ज्यादा बेटर है Okay, so scope of CEH certified ethical hacking. गूगल पे सिर्फ इतना सा लिखना कि CEH आंसर्स के सॉल्यूशंस तो आपको स्कोप दिख जाएगा CEH का. हाउ टू यूज बाईपास फायरवॉल इन SQL मॉड सिक्योरिटी पढ़ना थोड़ा सा स्टार्ट करो सिदेश आप ये भी कर पाओगे. I got hired as a Salesforce developer. Tanish, congratulations. But being a fresher, my doubt is if I continue in Salesforce, then I won't be able to switch to any other domain. Yes, this is a fact. This is a fact. But yes, it depends. Salesforce में भी अलग-अलग चीजें होती है. आप प्रोग्रामिंग साइड पे जा सकते हो, डेवलपमेंट साइड पे जा सकते हो सेल्सफोर्स में. तो या डेफिनेटली चीजें काफी बढ़ सकती है आगे. स्पैम अटैक ट्रेसेबल होता है क्या भैया जैसे यहाँ वेबसाइट करती है वैसे मैसेज बॉम्बर हर अटैक ट्रेसेबल होता है लॉग्स होते ही होते हैं तो लॉग्स निकालना बहुत आसान है हर सर्वर के अंदर लॉग्स होते हैं आपको पता है एक पैकेट होता है ARP पैकेट और ये बहुत सारे पैकेट्स होते हैं आप एक बार पैकेट की नेटवर्किंग की स्टडी करोगे तो उसमें आप लोगों को दिखेगा कि आप जैसे ही कोई भी कनेक्शन बनाते हो आपका मैक एड्रेस जाता है आपका IP एड्रेस जाता है और वहाँ पे एक लॉग क्रिएट होता है तो इट्स क्वाइट ईजी आउट देयर is PHP outdated? If not, that learning PHP is worth it. PHP का मार्केट हिलाना बहुत मुश्किल है ये बात फैक्ट है बट PHP का मार्केट ऑलमोस्ट हिल चुका है नए स्टार्टअप में अभी भी PHP यूज हो रहा है एट सम प्लेसेस ऑफ कोलकाता अभी वहां तो .NET भी यूज हो रहा है तो इट डिपेंड्स आपको कहाँ जॉब चाहिए उसके बाद आप टेक्नोलॉजी सीखो इफ यू आर शिफ्टिंग इन बैंगलोर और समवट आउट देयर वहां पे भी आप PHP की थोड़ी डिमांड रख सकते हो बट हाँ रिएक्ट और इन चीजों की ज्यादा डिमांड होगी तो आई थिंक यू शुड गो विद दैट So last 5 minutes, last 5 questions, in fact, and then we are going to sign out from here. And I'll catch you all at my Instagram because Instagram पे भी मैंने आज ही ये मैं post किया है. So I'll catch you all there. Okay, so HTML, CSS, JavaScript versus HTML. ये कैसा क्वेश्चन है? HTML, CSS, JavaScript is undoubtedly better. बट ये अगेन फ्रंट एंड पे है PHP एक ऐसी लैंग्वेज है जो बैक एंड पे कम्युनिकेट कर सकती है बट आजकल ट्रेंड में जावास्क्रिप्ट चल रहा है ट्रेंड में क्या उसके यूटिलाइजेशन भी इतने अच्छे हैं इतना फास्ट है जावास्क्रिप्ट PHP कितना स्लो है बट हाँ ये स्टैक होता है टेक्नोलॉजीज का तो आई थिंक जावास्क्रिप्ट इज अ मच बेटर चॉइस विकी इज वेरी क्यूरियस टू सी माई वीडियो विद हितेश चौधरी सर सो वो मानते ही नहीं है यार मैंने बोला उनको कि आप मेरे साथ एक वीडियो कर लो पर उन्होंने माना ही नहीं तो आप उनके इंस्टाग्राम पे बोलो कि सर प्लीज सक्षम सर के साथ वीडियो बना लो तो मैं तो बना लूंगा मेरे तो फायदा ही है सब्सक्राइबर्स भी बहुत आएंगे ट्रैफिक भी बहुत आएगा कितनी बढ़िया चीज़ है बट मानते नहीं है सर कोई नहीं बट वैसे एक वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है यूट्यूब पे तो आप देख सकते हो काफ़ी पुराना वीडियो है बहुत सालों पहले का वीडियो है बट ये सब देख सकते हो वो अभी भी हाउ टू जॉइन साइबर सिक्योरिटी इन इंडिया आई थिंक जो हमने एक नया ऐप निकाला है साइबर काउंसिल वहाँ पे आप देख सकते हो अच्छे से कि बहुत सारे ब्लॉग्स बहुत ही प्रीशियस ब्लॉग सबमिट करे हमने वहाँ पे बग्स भी हमने कैसे निकाले हैं बड़ी बड़ी वेबसाइट्स पे हुआवे नाइकी वगैरह उसका स्टेप बाय स्टेप मेथोडोलॉजी हमने दिया है वहाँ पे तो yes you should really explore the cyber council and you should download that onto your play store you'll find a lot about hacking there so how ये हो गया OSCP versus EJPT OSCP any day OSCP is very good course out there विक्की स्टॉप स्पैमिंग महादेवी सूतर जी को प्रॉब्लम हो रही है विक्की जी आप स्पैम करना थोड़ा रुक जाओ ऑल माई लव टू यू बैक
कुमार सर्वेश, दिस इज व्हाट आई लव. पीपल स्टार्ट लविंग मी बिकॉज मे बी मैं थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट पिक्चर दिखा देता हूँ लोगों को. शायद इसलिए ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि कोई मतलब नहीं है ना मैं बोलूँ कि ये कोर्स खरीद लो, वो कोर्स खरीद लो. थोड़ी ट्रांसपेरेंसी भी ज़रूरी होती है ताकि आप अच्छी दिशा में जा सको. ताकि आज अच्छा लगता है व्हेन पीपल से कि सर बिकॉज़ ऑफ यू आई गॉट प्लेस्ड एट सोनी एरिक्सन. बहुत सारे लोग हैं जो हमने ट्रेन किए, अच्छे-अच्छे जगह प्लेस्ड हैं. सो मे बी दे आर प्लेस्ड बिकॉज़ वी शोड देम द राइट पाथ. तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं आजकल. वैसे भी हर कोई घर पे अपना बढ़िया कैमरा लगा के और यूट्यूबर बन जाता है. बहुत सारे स्टूडेंट्स को ही देखता हूँ मैं तो, जो मुझे से ही पढ़े हुए हैं वो भी यूट्यूबर हैं. सब अच्छा काम कर रहे हैं अपना. बट आपको देखना है कि फॉलो किसको करना है. मार्केट में लोग डेफिनेटली 50 हैं, ऑप्शंस भी 50 हैं. मुझे पता है आज आप लोग मेरा लाइव देख रहे हो, आप कल किसी और का भी देखोगे. बट क्या चीज़ आपको हिट कर रही है दिमाग में, क्या चीज़ लगता है आपको ट्रांसपेरेंसी है जिसमें, क्या चीज़ ऐसी है जो आपको बुरी लग रही है या थोड़ी हार्ड लग रही है, वही मेरे ख्याल से सही बात है. एंड देन लास्ट 5 क्वेश्चंस. जावा और सी प्लस प्लस, डीएसए और साइबर सिक्योरिटी, ये कैसा क्वेश्चन है? And can Mac ID be changed and use ghost IP so that it leaves a trace log that cannot be traced? Yes, Mac Changer नाम का एक टूल है Kali Linux में, जहाँ पे वो मास्क कर देता है ऐप का आईपी एड्रेस एक सेशन के लिए. रीस्टार्ट करोगे तो दोबारा से चेंज हो जाएगा. मैक एड्रेस इज बेसिकली अ बर्न्ट इन एड्रेस दैट कैनॉट बी चेंज बट इट कैन बी मास्क्ड. Love from Pakistan. Love back to the people of Pakistan. Rao Shazeb. Uh, Maybe he's against nepotism. Anyways, so last question, sir. Shout out, Dedo. I'm your big fan, Rao Shazib. I wish you a very great future ahead. Make sure keep learning. Make sure you keep learning, and make sure you keep supporting us. What is DevOps and future scope of DevOps has a great future scope, but उसके लिए मेहनत बहुत लगती है. बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़नी पड़ती है और उसका इम्प्लीमेंटेशन देखना पड़ता है, तब जाके DevOps हल्का फुल्का हिलता है. बहुत सारे लोग सिर्फ हिलाने की ही कोशिश कर रहे हैं, अभी तक DevOps ठीक से हिला नहीं है बहुत सारे लोगों से. सो ये DevOps है तो बहुत अमेजिंग, बट मेक श्योर यू आर ऑन अ राइट पाथ ऑफ DevOps एंड मेक श्योर यू डोंट गिव अप. मोस्टली लोग गिव अप कर जाते हैं DevOps पढ़ते पढ़ते, तो दैट इज अ प्रॉब्लम आउट देयर. What is the best way of completely anonymous on internet? That is Tor plus proxy, best choice. Yes, definitely. I don't tell people to stay anonymous publicly. How can we practice ethical hacking labs for free on which platform? So, Goku, we have amazing plans for ethical hacking. We are trying to create our own lab on Cyber Council where you can try a lot of attacks. Also, we are introducing a lot of courses related to like CSP 2.0 is about to get launched, जिसमें हम लोगों ने काफी एडवांस अटैक रखे हैं. And I come live and I teach them live personally. So make sure you keep an eye on CSP 2.0 via my Instagram, that is Saksham the Computer Guy. विक्की विक्की ने एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन लिखा है, हाउ मच डू यू अर्न इन अ मंथ, जिसकी वजह से मैं हितेश सर के साथ तो नहीं आऊंगा. और asking someone how much do you earn in a month is definitely not a good question to ask. So yes, I think you should avoid asking that questions. These are not the good questions. So can you review research papers on information security that's recently published? These papers are too difficult to understand. Can you make a series? Yes, we can definitely talk about the cyber security research papers. Solidity, blockchain. Blockchain is the next future, undoubtedly. People are doing a lot of things into the blockchain out there. Is GitHub Copilot a thing of future? Yes, definitely. People are already using that. I'm not going to disclose, but I know someone that you guys follow that is already using that. So yes, definitely GitHub Copilot is a good thing. Last question. I really want to know how to enroll in your course and support do we get? Cloud Kiral, make sure you drop me a text on my Instagram, and someone from my team is going to reply you on how to get enrolled into my courses. Again, I'm repeating before going, I'm repeating my username. That is Saksham the Computer Guy. Make sure you drop me a message over there. And one more thing, I really know a lot of people are contacting me on Instagram, and my PR team is trying their hard to reply them. Most of the time, even I don't reply them. But definitely, I keep on coming for the Ask Me Anything questions on Instagram. So yes, make sure you see that. Nice to see you again. I'm good as well, Shashank, but I think you're quite late. So Rao Shezab, you can also contact me on Instagram regarding this video course. So that's it for this live, and it was really amazing to suddenly come live and interact with you people for like big 45 minutes.
I think I'll come again maybe next Saturday or Sunday, and I'll interact with you all. Make sure you subscribe my channel and make sure you turn on the notification thing out there so that you can get a quick message whenever I come live and you can ask me anything that you wish. So that's it for today. Thank you everyone for joining, and I'll see you again soon on YouTube Live.